try to complete that one. Okay, this is unit number third. Into 1 minute. Yeah, nitrogenous industries. Okay, nitrogenous industry means related to nitrogen. Uh, Actually, this is not one related to a nitrogen, sub nitrogen related product actually. Okay, these are the course outcome. As usual, you have to see these course outcome. COs 1 to 6 of this particular subject in organic process technology. And today I will discuss about the unit number third, ammonia and nitric acid only. Okay, and however, NPK fertilizer, micronutrient, mixed fertilizer, I will show a little bit. I will show in the PDF format, and however, I will share all those data, those information PDF. If possible, then I will take couple of more classes after your mid-sem examination. Okay, this is ammonia. Okay, you all are well familiar with the ammonia. सबको अमोनिया के बारे में पता है या आई थिंक आप लोग जब से होश संभाला होगा तब से सुना होगा एटलीस्ट जूनियर सेक्शन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में भी तो सुना ही होगा ठीक है इसके बारे में there are number of uses of ammonia and most of the ammonia is consumed in which sector fertilizer sector actually okay and फिर कूलेंट टूलेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं इसका just if you think about the basic definition of this one ammonia is just inorganic compound composed of a single nitrogen atom. Yeah, ammonia is an inorganic compound composed of a single nitrogen atom covalent bonded to three hydrogen atoms. Okay, that is an amidase inhibitor and neurotoxin. ठीक है न्यूरोटॉक्सिन है न्यूरोटॉक्सिन मीन्स होता है जस्ट वो एलिमेंट है डिस्ट्रक्टिव टू नर्व टिश्यूज ठीक है if you tell the basic definition of neurotoxins so neurotoxins alters the structure or function of the nervous system actually of human and the basic formula of chemical formula just NS3 yeah uh, here you can see some basic information related to ammonia. Molar mass 17.03 gram per mole. Appearance just colorless gas. Odor strong pungent odor. Densities here you can get some varying density based on the temperature. Okay. 0.86 kilogram per meter cube at standard temperature and pressure it will be 0.769 kilogram per meter cube at 15 degrees Celsius 0.73 kilogram per meter cube and minus 33 degrees Celsius it is 681.9 kilogram per meter cube. Okay, a little bit doubt related to that one. However, I have taken data. I have shared that link here. Okay, so here is a huge variation. Okay, in density, melting point is minus 77.73 degrees Celsius. Boiling point is minus 33.34 degrees Celsius. Critical point 132.4 degrees Celsius. Solubility in water 47 by weight at 0 degrees Celsius, 31% soluble at 25 degrees Celsius, and 18% by weight soluble in water at 50 degrees Celsius. Okay, and it is soluble in chloroform, ethanol, and methanol. Okay, these are the some basic information related to the ammonia. Ammonia is just produced naturally in the human body and nature in water, soil, and air, even in tiny bacteria molecules. Human health, ammonia and the ammonium ion are a vital component of metabolic process. Actually, these are the bio-related process. So, uh,
We are not going to concentrate this one. Ammonia, either directly or indirectly, is also a building block for the synthesis of many pharmaceutical products and is used in many अरे अरे commercial cleaning products. Okay. Uh, there are pharmaceutical industry, one of the major uses of ammonia, major consumption of ammonia in the pharmaceutical industry, pharmaceutical products, and medicine, and all those things. And in the process of that unit, and it is also used in cleaning products. Okay, ammonia is both caustic and hazardous in its concentrated form. When it will be concentrated, then it can be hazardous. Okay, uh, it is classified as an extremely hazardous substance in the United States. ठीक है तो यूनाइटेड स्टेट्स का अपना अलग क्राइटेरिया चलता है तो उन्होंने इसको एक्सट्रीमली hazardous के कैटेगरी में डाला है जो अदर एलिमेंट के साथ में. The global industrial production of ammonia in 2018 was 175 million tons. Okay, IPT name is ammonia tri hydra hydridonitrogen. Okay, trihydridonitrogen. This is the IPSC name. Nitrogen trihydride. It is also known as nitrogen trihydride. अदर्स नेम है. हाँ, ये चीज आप लोग प्लीज ध्यान रखना. आप लोगों को मैं हमेशा बोलते आया हूँ, ठीक है. जो अदर्स नेम है, ठीक, किसी भी मटेरियल के, किसी भी कंपोनेंट के, आ, किसी भी केमिकल के, वो आपको याद रखना पड़ेगा. अदरवाइज सपोज you got a question related to write down something about the azane, then you will be stuck at that time. Okay, azane is nothing but it is ammonia. Okay, while you know all those things related to ammonia, you will not be able to do anything. Okay, at that time. तो ये जो अदर्स नेम है इसीलिए मैंने स्पेशली मेंशन किया है इस बार कि आप लोग एटलीस्ट फेमिलियर रहो उससे. Azane only intended for use in naming derivatives of ammonia. हाइड्रोजन नाइट्राइड इट इज आल्सो नोन एज. ऐसा हाइड्रोजन नाइट्राइड मिलता है तो ऐसा मत सोचिएगा कि वो कुछ अदर है. ठीक है तो वही अमोनिया ही है. और 717 R717 ये हमारा रेफ्रिजरेंट है. ठीक है, इसको यूज करते हैं. दिस इज आल्सो अमोनिया यूज्ड एज refrigerant. Okay, and here one of the most characteristic properties of the ammonia is its basicity. ठीक है, ammonia is considered to be a very weak base. It combines with acid to form salt. Thus, with hydrochloric acid, it forms ammonia, ammonium chloride. Here you can see. सिमिलरली नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके इट विल फॉर्म द अमोनियम नाइट्रेट. तो यह हाइड्रोक्लोरिक के साथ में जब हमारा अमोनिया रिएक्ट करता है यू आर गेटिंग हियर अमोनियम क्लोराइड. ओके, इट इज प्रोटिक. ठीक है, प्रोटिक हमने बताया था दैट कंटेन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ओके, or you can say solvent that has a hydrogen atom bound with an oxygen, nitrogen, or chloride. Okay, here nitrogen is present, so this is protic substance and is capable of formation of amides which contain this ion. For example, lithium dissolved in liquid ammonia to give a solution of lithium amide. ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये प्रॉपर्टी में है. कभी पूछ भी सकते हैं. ठीक है, व्हाट विल हैपन व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन ऑफ कोर्स यू will be getting ammonium chloride. Okay, these are the properties actually. When ammonia react with the lithium, you are getting uh, lithium amide. Okay, plus hydrogen self dissociation. Okay, like water, liquid ammonia undergoes molecular
auto-ionization to form its acid and base conjugate. Here you can see यहाँ पे अमोनिया है, ब्रेक हो जा रहा है NH4 आयन और NHN माइनस में, ठीक है. Combustion, the combustion of ammonia to nitrogen in water is exothermic here, and you will be getting nitrogen and water here, and this is exothermic. Okay, this amount of heat will be rejected there. तो अमोनिया जब हमारा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, यू विल बी गेटिंग नाइट्रोजन. रिएक्ट का मतलब है कंबशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे. एंड huge amount of energy will be evolved there. Okay. Now, usage of ammonia. There are number of uses of ammonia, and you all are familiar. Like here, you can see making of fertilizer, manufacturing of nitric acid, revive fainted people. Something I'm not familiar about this one. Electrolyte in dry cell, prevent coagulation of latex. ठीक है, ये हमारा रबर इंडस्ट्री में जनरली यूज करते हैं. मेकिंग अप एक्सप्लोसिव synthetic fibers, cooling agent. Okay, so we all say this one, this at least cooling agent we know. Making of fertilizer industry में use amount of ammonia is used actually. ठीक है, नाइट्रिक एसिड, तो कम से कम ये सारी चीजें हम लोग को पता है. ओके, एंड यूजेज ऑफ अमोनिया जस्ट नाइट्रिक एसिड, अमोनियम नाइट्रेट, फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लोजिव में यूज करते हैं दिस वन अमोनियम नाइट्रेट का. फाइबर्स एंड प्लास्टिक, ठीक है, ये हमारा नाइलॉन इंडस्ट्री में जनरली यूज होता है. फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में बी विटामिन समथिंग कुछ, ठीक है, यहाँ यूज करते हैं. थायमाइन में यूज करते हैं, ठीक है, अमोनिया का. क्लीनिंग प्रोडक्ट, माइनिंग एंड मेटलर्जी इंडस्ट्रीज, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पल्प एंड पेपर. ओके, paper industries. And when you will talk about industry wise, the consumption of ammonia, usage of ammonia, there are a number of industry where ammonia is generally consumed. Okay, fertilizer industry, petroleum industry, mining industry, rubber industry, पेपर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री. हम तो बोलेंगे यार हर जगह है. फूड इंडस्ट्री में भी आप जाओगे तो है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो. ठीक है, नंबर ऑफ जितना भी आपको याद है हर जगह यूज होता है लमसम अमोनिया. ठीक है, मे भी कुछ जगह छोड़ के. आप ऐसा नहीं कर देना कि आप सिंपल सा कोई भी क्या बोलते हैं पेंट इंडस्ट्री या समथिंग ऐसी जगह मेंशन कर दो. तो जहाँ पे आप जानते रहो वो इंडस्ट्री में लमसम हर जगह यूज होता है अमोनिया. मेन यूजेज ऑफ अमोनिया या द शेयर ऑफ अमोनिया यूजेस, मोस्टली हमारा कितना है 85% शेयर इज एसोसिएटेड विद द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. 85% whatever ammonia produced throughout the world. Okay, 85% of ammonia are used in the fertilizer industries, and in explosive 5%, textile industry cover 5%, and other 5%. तो आप इसे अनुमान लगा सकते हो कि ठीक है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में अमोनिया का कितना बड़ा रोल है. ओके, वो अमोनिया पे ही चलती है. ओके, दिस इज द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द अमोनिया. हैव अ प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट विद द presence of and ion catalyst to form ammonia. This is a flow diagram. Actually, I will go, if I will go to detail, then I will not be able to show that thing. Okay, मैं just overview इसका बता दे रहा हूँ आप लोगों को. Okay, there are actually 6 steps here. ठीक है, in step first, that one is hydrogen production. Okay, actually in Haber process, nitrogen and hydrogen generally react in the presence of an iron catalyst to form ammonia. Okay, the hydrogen is formed by the uh, reaction given here. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन
You are getting hydrogen here. Second one is hydrogen production. You can see that hydrogen is produced by the reaction of methane with water. Generally, here methane when reacted with the water, you are getting the hydrogen. Before this, all actually before the production of this one, all sulfurous matter whatever coming from through the air must be removed from the natural gas to prevent the catalyst poisoning. Okay, these are removed by heating the gas to about 400 degrees Celsius. Yeah, okay, 400 degrees Celsius and reacting it with the zinc oxide. Zinc oxide will be used here. Okay, when zinc oxide react with the hydrogen sulfide, it will form zinc sulfide plus water. Okay, and you easily remove that zinc sulfide. The gas is sent to the primary reformer. Then this one. Okay, for steam reforming, where superheated steam is fed into the reformer with methane. 1 minute here. This is not working. Okay. The gas mixture is heated with the natural gas to about 700 to 770 degrees Celsius. That's this section. Okay. In the presence of nickel catalyst. Here, uh, methane converted into the hydrogen in this section. Okay. And this is hydrogen production actually, and after that hydrogen production there will be nitrogen addition. Actually, whatever gas, this is synthesis gas actually, H2 plus CO2 here. Okay, so this synthesis gas is generally cooled down and then flows to a secondary reformer. Okay, this one here, where it is secondary reformer, where it is mixed with a calculated amount of air. You can see here the air is coming from this section there, this here. Okay, and the highly exothermic reaction between oxygen and methane produce more hydrogen. These are some important reactions here related to this one. When carbon monoxide here react with this one water, you will be getting carbon dioxide plus hydrogen. Okay, our main target is to produce the hydrogen here. Okay, we are getting hydrogen here, we are getting hydrogen here. Okay, and in addition, the necessary nitrogen is added in the secondary former as a catalyst that is used to form the ammonia is pure iron, water, dioxide, carbon dioxide and carbon monoxide must be removed from the gas stream here. Okay. Third one is removal of carbon monoxide. Actually here the carbon monoxide is converted to the carbon dioxide. Here you can see uh, this carbon dioxide is used later in the synthesis of urea, and this reaction is known as water gas shift reaction actually. Okay, and this is achieved in two steps actually. Firstly, the steam is passed over a chromium or ferric oxide catalyst at 360 degrees Celsius, and then over a copper or zinc oxide catalyst at 210 degrees Celsius. Yeah, that's right. Okay. And step four, just water removal. Water removal में क्या करेंगे? Whatever steam is coming, it is just heated here, and the gas mixture is further cooled to about 40 degrees Celsius, at which temperature the water is condensed and is removed. Okay. Then removal of carbon dioxide. The gas are then pumped up through a counter current. Okay, and whatever the uh, carbon dioxide remain there, the remaining carbon dioxide uh, is converted to methane using a nickel or ammonia catalyst at 325 degrees Celsius. Okay, this is a reaction here to CO plus CH2.
CH4, this is methane, and you are getting the hydrogen also. Okay, this happened at about 325 degrees Celsius temperature. Okay, and last one is synthesis of ammonia. Okay, this is final steps. The gas mixture is now cooled down, whatever we are getting there, and fed into the ammonia synthesis loop. A mixture of ammonia and unreacted gas which have already been uh, around the loop are mixed with the incoming gas stream and cooled to 5 degrees Celsius, and finally the ammonia present is removed and the unreacted gas is heated to 400 degrees Celsius. Okay, so whatever you will be getting the final ammonia. Okay, in this section. And second one is Kellogg process. In Kellogg process, you can use natural gas or naphtha. Okay, by using this steam, finally you can get the ammonia. These are the steps further. तो जैसे पहले बताया हमने desulfurizing process is very important during the ammonia production. Okay, to save the catalyst whatever we are using during the process here. Okay, एटलीस्ट पॉइजनिंग को से बचाने के लिए हम यहाँ पे जो भी सल्फर कंटेंट रहेगा गैस में उसको हटा लेते हैं, पहले ही रिमूव कर लेते हैं. तो यहाँ पे डीसल्फराइजेशन होगा, then reforming process, and these are the secondary formers after convert to separator. The water will be separated, then CO2, and similarly as we have already discussed in that one. Okay, it's same way procedure है, ठीक है. And finally, uh, passing to the ammonia refrigeration and separation unit, you will be getting the ammonia, okay, and nitric acid. I have 1 minute, okay. Nitric acid, also known as aquafortis, okay, and is split of niter. It is highly corrosive mineral acid. The pure compound is just colorless, but other samples tend to acquire yellow cast due to decomposition into oxide of nitrogen and water. These are some basic things you can read those things. Okay, chemical formula HNO3, molar mass 63 gram per mole, appearance colorless. ठीक है, कलरलेस होता है लेकिन हमारा वो ऑक्साइड सो decompose, yes, sorry, yellow cast due to decomposition into oxide of nitrogen and water. ठीक है, तो यहाँ पे yellow इसको होता है. This is fuming nitric acid. Okay, uh, order is acrid, suffocating. ठीक है, and density 1.51 gram per centimeter cube. ये वेरी करता है to 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है 68% by weight. ठीक है, कंसंट्रेशन रहेगा. मेल्टिंग पॉइंट इज -42 डिग्री सेल्सियस. So at general temperature, room temperature, you will be getting in liquid form. Okay, boiling point is 83 degrees Celsius. ठीक है, so after 83 degrees Celsius, it will be converted into gaseous form, solubility in water. This is completely miscible. ठीक है. Most commercially available nitric acid has a concentration of 68% in water. When a solution contains more than 86% of HNO3 or a nitric acid, it is referred to as fumic nitric acid. Okay, when the concentration of the nitric acid is more than 86%, okay, then it is known as fumic nitric acid. Okay, there are some basic property of nitric acid. Nitric acid is subject to thermal or light decomposition, and for this reason it was often stored to brown glass bottles. Okay, यहाँ पे decomposition हो जा रहा है light के साथ में. ठीक है, 4HNO3 nitric acid is decompose into uptake H2O NO2 plus oxygen में. A commercial grade of fuming nitric acid contains 98% HNO3. Okay, this one fumic nitric acid, and has a density of just 1.50 gram per centimeter cube. That has already mentioned. This grade is often used in explosive industries. ठीक है, तो हमारा जब concentration बहुत ज़्यादा होगा, you can say fumic nitric acid can be used
explosive industries. Okay, white fuming nitric acid, pure nitric acid, or WFNA. These are the name actually. White fuming nitric acid is very close to anhydrous nitric acid. It is available as 99.9% nitric acid by assay. Okay, 99.9%. Nitric acid can act as a base with respect to an acid such as sulfuric acid. यहाँ पे HNO2 यानी nitric acid when we act with sulfuric acid, you are getting NO2 plus, H3 plus, H2 something. These are some basic information related to that one. Nitric acid react with the most metal, but the details depend on the concentration of the acid and the nature of the metal. Yes, your okay. तो यहाँ पे है जब it will react with Mg and form the magnesium nitrate. Okay, and yeah, nitric acid react with Mn. ठीक है, manganese. It form the manganese nitrate. Okay, तो हमारा मेटल के साथ में भी रिएक्ट करता है. Depends upon the concentration of that nitric acid and metal property. Nitric acid can oxidize non-active metals such as copper and silver. Yeah, this is the reaction here. Okay, and the reaction with non-metallic element with the exception of nitrogen, oxygen, noble gases. These are the some basic things. And now we come on production of that one. Nitric acid is made by a reaction of nitrogen dioxide with water. Okay. So nitrogen dioxide react with the water, it will be forming nitric acid HNO3. Okay. Production of nitric acid is via the Ostwald process named after German chemist Wilhelm Ostwald. In this process, this is also important process actually, Ostwald process. Okay, please keep your mind. Okay. Uh, Anhydrous ammonia is oxidized to nitric oxide. Okay, this one in the presence of platinum or rhodium catalyst at a high temperature at about 500 Kelvin and a pressure of 9 atmospheric. Okay, either ammonia is oxidized in the presence of that platinum or rhodium catalyst at 500 Kelvin and form nitric oxide. Okay, and this is the exothermic reaction actually. And this nitric oxide is then reacted with the oxygen in air to form nitrogen dioxide. Nitric oxide reacts with the oxygen and is forming nitrogen dioxide. This is also exothermic reaction. This is subsequently this nitrogen dioxide is absorbed in the water to form nitric acid and nitric oxide. When this nitrogen dioxide absorbed in the water, it will be forming the nitric acid. At the same time, you will get the nitric oxide. This is also exothermic reaction. Okay, and the nitric oxide is cycled back for reoxidation. Alternatively, if the last step is carried out in here, this one is nitrogen dioxide, then it will oxidize in the in the presence of water. Okay, it will form the nitric acid. Okay, so these are the some basic information about the nitric acid. And when you will talk about the usage of nitric acid, it can number of area where it can be used, like fertilizer industry. फर्टिलाइजर में आपका अमोनियम नाइट्रेट मेन है. नाइट्रोफॉस्फेट में यूज होता है अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरियम अमोनियम नाइट्रेट, ammonium nitrate solution, ammonium sulfate nitrate. Okay, एंड नॉन फर्टिलाइजर में एक्सप्लोजिव में यूज होता है, केमिकल्स में यूज होता है. केमिकल्स में देखा जाएगा तो हमारा ये पॉलीएमाइड सिक्स सिक्स फ्लेक्सिबल पॉली यूरिथीन एंड बेसिक पॉलीयूरिथीन, ये सब बनाने में हमारा नाइट्रो बेंजीन डाई नाइट्रोटाइलिन सब में यूज होता है. ओके, दीज आर द सम बेसिक. ये like ammonia, here you can see ammonia का 86% था यूज. ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, या 85% in fertilizer industry. Similarly here you can see
Nitric acid is also a major role in the fertilizer industry. Major consumption in the fertilizer industry is about 80%. ठीक है, और दूसरी चीजों में बाकी के 20% में है. And I'm just going to start the sharing and one more things. Actually, I want to show last year question paper. This is not question paper. This is solution prepared by me actually. Yeah, I'm just going to share this one. Okay, this is inorganic process technology. Last year हमारा ही क्वेश्चन था. ठीक है, तो दिस इज यूनिट नंबर 1. यहाँ पे लेब्लांस प्रोसेस दिया था. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर, यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन पूछा गया था लेब्लांस प्रोसेस के बारे में, तो हमने यहाँ पे दे दिया है दिस प्रोसेस में, और रिलेटेड इक्वेशन यहाँ पे दिया था. ये शायद 2 नंबर का या 3 नंबर का था, 2 या 3 मार्क्स का. फिर इसके बाद में लाइन कास्टिसाइजिंग मेथड पूछा गया था. ठीक है, तो ये भी ये सिंपल है, इसके बारे में लिखना है. ठीक है, कि हमारा प्रोसेस क्या है. जस्ट 4-5 लाइन, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको इससे ज्यादा नहीं लिखना है. ठीक है, अगर ये सब ऑफ लाइन एग्जाम होता है, तो अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो नो नहीं. ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ये तब भी. अब फिर इसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ कॉमन साल्ट पूछा गया, तो आप कोर्स देयर आर सम प्रोसेस लाइक सोलर इवेपोरेशन, माइनिंग ऑफ रॉक साल्ट, डायरेक्ट कंजप्शन ऑफ salt brine. I have told you, ठीक है, all about that one. इसके बाद में, इसके बाद some basic information. फिर फर्स्ट यूनिट का लास्ट क्वेश्चन था मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा है, ड्यूल प्रोसेस पूछा गया था. तो हमारा जो प्रोसेस होता है, साल्वे प्रोसेस होता है, ड्यूल साल्वे प्रोसेस होता है, ड्राई लाइमिंग प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूल प्रोसेस में वही है कि रॉ मटेरियल्स, ये स्टैंडर्ड है जो लिखा गया है कि दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. ठीक है, हमारा रिएक्शन इन्वॉल्व वट एवर द रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस, एंड इसके बाद में स्टेप्स है. इसके बाद में ये हमारा फ्लो डायग्राम था. ठीक है, ओके. तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ये सोडियम कार्बोनेट बाय ड्यूल प्रोसेस. फिर इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन था, दैट इज ऑप्शनल क्वेश्चन, डिफरेंट शेल टाइप एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक सोडा, NaOH, क्लोरीन. ओके, प्लास्टिक सोडा एंड क्लोरीन. तो हमारा ये टाइप ऑफ सेल है, डाइफॉर्म सेल, मरकरी कैथोड सेल, मेम्ब्रेन सेल. दिस इज simple thing. Okay, I will share this one. And these are the reaction associated with different cell, and there are some basic information about that cell. Okay, I mentioned here in unit 2. Okay, प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर पूछा गया था, जैसा कि आप बोलते हैं अपनों से. ठीक है, तो दिस इज सिंपल फन. यू कैन राइट दोज थिंग्स. मेजर यूजेज ऑफ म्यूरियाटिक एसिड. ठीक है, ये देखिए आपका म्यूरियाटिक एसिड पूछा गया था. ठीक है, म्यूरियाटिक एसिड क्या है? एनीवन? हेलो? सल्फ्यूरिक एसिड. नहीं. ये हमारा नथिंग बट दिस इज HCl यार ना. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट, आई एम टेलिंग मेनी टाइम्स दैट प्लीज, हमारा जितना भी नाम है वो सब पता होना चाहिए. क्वेश्चन घुमा दिया गया था, और सारे बच्चे, सभी लोग HCl के बारे में जानते हो आप लोग सब. कुछ तो एटलीस्ट 2-4 लाइन तो आप लिख ही दोगे. ठीक है, जो नहीं भी पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं, कि HCl हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, HCl हम यहाँ यूज करते हैं. ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ऐसा कुछ लिख सकते हो आप. ओके, लेकिन अगर आप जानते नहीं हो तो कहाँ से लिखोगे यार. तो दो में से एटलीस्ट एक दो, अगर 3 मार्क्स का है तो आपको 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे वहाँ पे. लेकिन अगर उसका नाम ही नहीं पता चल पाएगा, तो वहाँ पे लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुई थी. लोग
मैंने कॉपी भी चेक किया था, मैंने देखा था लोग कंफ्यूज हो गए थे, कुछ भी लिख दे रहे थे ना, ठीक है। बच्चा अब वो जानता ही नहीं है, तो muriatic acid is this one, muriatic acid is used for the soap industry, used in the soap industry, used in the polymer industry। अब muriatic acid उसको पता नहीं हवा में छोड़ रहा है कहीं पे भी ना। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा आप लोग। एंड इसके बाद में था मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इन द वेट प्रोसेस फास्फोरिक एसिड सिलेक्शन, ठीक है। ये सब सिंपल चीज़ है, अगर आपको प्रोसेस पता है ना, तो आप इंजीनियरिंग प्रॉब्लम खुद आप जनरेट करके लिख सकते हो, ठीक है। ये कोई स्टैंडर्ड प्रॉब्लम नहीं होती है, ये जनरल प्रॉब्लम जो हर इंडस्ट्री, हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएगी आएगी। तो प्रोसेस पता है, आपको लग जाएगा कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये नंबर आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने 2 लिखा है, आप और भी अलग तरीके दूसरा कर सकते हो। हैंडलिंग स्टोरेज प्रॉब्लम जनरली आती है, सारी इंडस्ट्रीज में आती है, ठीक है। तो दिस वन है। इसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फास्फोरिक एसिड बाय वेट प्रोसेस इन्वॉल्विंग एचसीएलडीसी, ठीक है। तो दिस इज है, यहाँ पे फ्लो डायग्राम दिया गया है, आई विल शेयर दिस वन, ठीक है। फिर इसी तरह यूनिट नंबर हमारा 2 का ई था, ठीक है। यहाँ पे ये फ्रेश प्रोसेस पूछा गया था, कभी नहीं पूछा गया था, लास्ट टाइम पूछा गया था। लास्ट टाइम पेपर वाज क्वाइट डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है। ये बहुत मुश्किल से मिला था।